இது 1626. இது இப்போ ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி அந்த ஷோ வந்து நடக்கிறதுக்கான இது டெமோ. இது ஆக்சுவலாக 1819 தான் டெமோ நடக்கும். இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஆளுநர் வராங்க விசிட்டு. இது எங்கே பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ விசாகப்பட்டினத்தில் பார்க்குறோம். Ladies and gentlemen, today's chief guest, Justice S. Abdul Naziri, the Honorable Governor of Andhra Pradesh, has arrived. You are now requested to rise for singing of Vande Mataram, followed by the national anthem. May our voices sing in unison. अब आप सभी से विनम्र अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हो जाएं. గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు వచ్చి ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు జాతీయ గీతం మరియు జాతీయ గానాన్ని ఆలపించడానికి లేచి నిలబడవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను. Ladies and gentlemen, look towards your left as three magnificent chasing helicopters are approaching the grandstand. Ladies and gentlemen, give it up for these three indigenous advanced light helicopters flying in arrowhead formation. The formation is piloted by दो स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का एरोहेड फॉर्मेशन जो अभी समक्ष आपके सामने आ चुका है. इस फॉर्मेशन का संचालन कर रहे हैं now appearing in front of us from the left are two Seeking 42 Charlie helicopters being piloted by ఇప్పుడు మన ముందు రెండు సీకింగ్ చార్లీ హెలికాప్టర్లను మనం చూస్తున్నాము. దీనికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది इस हेलीकॉप्टर में भारतीय नौसेना ने एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की अग्रणी भूमिका निभाई है. ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू इवैक्यूएशन प्रतिष्ठान now appearing from the left is a Kamu 28 helicopter being piloted by ఇప్పుడు మన ముందు ఒక కామో 28 హెలికాప్టర్ చూడగలము. దీనికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది हमारे सामने एक कामो 28 हेलीकॉप्टर उपस्थित है जिसका संचालन कर रहे हैं. coming up right behind are three Kamu 31 helicopters being piloted by अब हमारे सामने तीन कामो 31 हेलीकॉप्टर उपस्थित हैं जिनका संचालन किया जा रहा है. काल मजा आता था நம்ம இந்தியன் நேவியோட பவரை பாருங்க. जो नौसेना बेड़े की पहुंच शिथिल से कहीं आगे तक विस्तारित है. रेडियो सचमुच जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करते जाइए. இங்கே எல்லாம் எவ்வளோ ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. సుదూరంగా మరియు ముందస్తు హెచ్చరికతో రూపొందించబడింది. Ladies and gentlemen, look right in front of you and get ready to be enthralled by a majestic display of aerial prowess testament to India's growing maritime mind by three multi-role MS-16 Romeo helicopters. रेडियो सचमुच
की उन हेलीकॉप्टर्स MH-60R द्वारा प्रस्तुत एक भव्य एवं क्रमिक दक्षता प्रदर्शन की साक्षी होने के लिए तैयार हो जाइए। ये भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। భారతదేశం యొక్క సముద్ర శక్తికి నిదర్శనంగా 3 మల్టీరోల్ హెలికాప్టర్లు MH-60R ద్వారా అద్భుతమైన ప్రదర్శనను చూసి ముగ్ధులవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. Ladies and gentlemen, approaching from your right are the immediate support vessels of the Indian Navy. Firing flares, the MS-60 Romeos are demonstrating the capability of their advanced self-protection suit. जोरदार तालियों के साथ स्वागत विश्व के सर्वाधिक उन्नत हेलीकॉप्टर Firing flares, leading the formation is Captain Snail suit. देवी सजना आपके सामने 3 विकल्प विमान ने एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान ఫ్లైట్ పోదు పాருங்க. స్క్వాడ్రన్ 311 యొక్క కమాండింగ్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలోని 4 డానియర్ పెట్రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు వజ్రాకృతిలో మనం చూడవచ్చు. Ladies and gentlemen, आपने अभी जो देखा वो है 4 डॉनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो डैम इंफॉर्मेशन में आपके सामने से निकले हैं। इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 311 के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा किया जा रहा था। Ladies and gentlemen, next up we can see a Coast Guard Dornier patrol aircraft led by తర్వాత మనం నేతృత్వంలోని కోస్ట్ గార్డ్ డానియర్ పెట్రోల్ విమానాన్ని చూడవచ్చు. Ladies and gentlemen, on your screens you can see the cockpit view from these Dornier patrol aircraft, giving you a unique insight on what the pilot sees from inside the cockpit. நான் 1819 வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை விட இன்னும் நல்ல செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இது அதோட ஒரு ட்ரையல் மாதிரி, அதாவது மார்க்அப் மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. Reconnaissance aircraft are fast and reliable. They monitor coastal waters and undertake search and rescue operations and surveillance missions, thus safeguarding India's vast coastline. यह बहुउपयोगी नाइट पेट्रोल एवं रिकॉनेसेंस विमान तीव्र, विश्वसनीय एवं सक्षम है। Ladies and gentlemen, now look up at the majestic PHI of the Indian Navy, piloted by firing flares. Fire This bundle. indomitable aircraft is demonstrating its advanced defense suit. रेडियो सज्जनों, अब आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना के भव्य PHI का फायरिंग फ्लैग और इसे उड़ाया है மறுபடியும் ஹெலிகாப்டர் வருது. Ladies and gentlemen, you will now see 2 ALH and 2 JDAC helicopters performing search and rescue demonstration. रेडियो सज्जनों, अब आपके सामने 2 ALH और 2 JDAC हेलीकॉप्टर उपस्थित हैं जो खोज और बचाव का रोमांचक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. We request రెండు ALH మరియు 2 JDAC సోదరులు మరియు రక్షణ You will shortly see 3 divers and JDAC to rescue the people in distress. आप JDAC हेलीकॉप्टर को देश की सहायता से उत्तर प्रदेश को पानी हेलीकॉप्टरों को बचाते हुए दिखेंगे. ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తులను రక్షించడానికి JDAC నుండి డ్రైవర్లు నీటిలో వెళ్ళడానికి బూట్లను ఎలా ఉపయోగిస్తారో మీరు పర్యవేక్షిస్తారు. அதாவது ஆள் இறங்கி தூக்குற மாதிரி டெமோ பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹெலிகாப்டர் கீழே டெமோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேலே இன்னொரு ஹெலிகாப்டர் வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு. இங்கே போட்டில் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேலே ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து ரவுண்ட் அப்பில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations that include oil-rich platforms and their subsequent pipelines. You can now see the commandos rapidly hooking onto the line from the helicopter. ரெண்டு பேர் ரெஸ்கியூ பண்ணுறேன்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஃபயர் பண்ணுறாங்க. And now look at the commandos fly away with ease, still hooked onto the helicopter, displaying a dashing power of courage and precision. प्रेमियों और सज्जनों, साहस, कौशल और अदम्य संकल्प के प्रति मार्को अब हेलीकॉप्टर के साथ अग्रसर होते हुए